The solid conducting sphere having charge q is surrounded by an uncharged concentric conducting spherical shell. Potential difference between the surface of solid sphere and shell is V. When the shell is now given a charge minus 3 q in potential difference. The concept of हमने already class में किया हुआ है कि whenever you give the charge on the outer sphere, the potential difference between the two spheres remains unchanged. तो potential difference vary नहीं करेगा. But इसको अगर हम mathematically prove करें, if you have two concentric spheres, solid conducting sphere and a shell, इससे what happens is the charge inner bit q and outer bit is q. So if you write the potential of inner sphere into its own charge potential is q1 by half, and potential into outer sphere is same as potential on the surface. Whereas potential of outer sphere अपने चार्ज के कारण इट्स आउटर स्फीयर के लिए q2 by r2, इनर स्फीयर के लिए इट्स q1 by r2. सो डिफरेंस जो आएगा डेल्टा ऑलवेज बी That means the potential difference does not depend on charge on the inner sphere. इसे हमें आउटर स्फीयर का चार्ज देखना है, इनर स्फीयर पे कुछ भी चार्ज होगा तो will not affect. So अगर initial potential difference V है, giving sphere to outer charge will not change the potential difference. Clear है इसको कि आउटर स्फीयर को चार्ज देने से पोटेंशियल डिफरेंस वेरी नहीं करता. In a typical lightning flash, a 30 coulomb charge is transferred between 0.7 potential difference of 10 raised to the 9 volts. If energy released would be used to melt ice, the amount of ice that will melt in grams. So basically melting of ice may require the latent heat. 0 डिग्री पे है तो चेंज इन टेम्परेचर इज नॉट रिक्वायर्ड. 0 डिग्री पे आइस डायरेक्ट मेल्ट कर जाएगी. But जो electrical energy है that has to be converted into heat energy. Initially it's electrical energy which is transferred and finally it's getting converted into heat energy. कौन सा फॉर्मूला लगाएं? एनर्जी स्टोर्ड का फॉर्मूला मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी का फॉर्मूला इसमें कौन सा लगेगा? हमें केवल चार्ज इज ट्रांसफर्ड. The charge transfer हो रहा है through a certain potential difference. So what will be the amount of ice that will melt? थोड़ा इसको सॉल्व बताओ आंसर क्या आता है. हमें ये चार्ज moves through potential difference of V volt. सॉल्व में आंसर बताओ शॉर्ट में क्या आता है. प्लस हमें दिया चार्ज ऑफ 30 coulomb. Then it falls through potential difference of 10 raised to the 9 volt. So we say increase in energies if this energy will get converted into heat.
This energy is used to melt ice. तुमने बताया amount of ice that will melt. The mass m is equals to choose 30 delta V is 10 raised to the 9. Latent heat of ice 80 calories per gram, 336 joules per gram. kg बोलोगे तो 336 into 10 raised to the 3. So this will be the answer we solve for this. So we'll get most probably this will be the answer 8.93 into 10 raised to the 7. Half length of radius r has linear charge density lambda, potential at a center of place. You have a half length. Potential at center. Now, potential में कोई डायरेक्शन इन्वॉल्व नहीं है तो अगर हम एक छोटे से पार्ट की पोटेंशियल निकाल लें एंड देन इंटीग्रेट यू विल गेट द रिजल्ट बट इसमें कैलकुलेशन आसान है बिकॉज जितने भी हम स्मॉल पार्ट्स लेंगे लाइक अगर मैं एक छोटा सा पार्ट कंसिडर कर चार्ज ऑन इट इज चार्ज पर यूनिट लेंथ इनटू लेंथ लैम्डा डीएल तो अगर इसके कारण मैं पोटेंशियल लिखूं 1/4 by epsilon naught q by r. The lambda dl by r. Total potential बतानी है so you can integrate. Integration of dl is semicircle है तो it's pi r. So you get answer as lambda by r cancel pi cancel 4 pi. Sweet answer. क्लियर है सबको कैसे किया नेक्स्ट इज parallel plate capacitor with air medium has a capacitance of 10 microfarad. हमें ऐसे given in parallel plate capacitor इसकी capacitance है 10 microfarad. Parallel plate capacitance of epsilon or A by D. Now it's divided into two equal halves and filled with two mediums of dielectric constant K1 and K2. Area of the capacitor is divided into because either you divide the distance between the two plates into two halves or area between the capacitor plates is divided into. इस केस में हमने एरिया को डिवाइड किया इसमें डायरेक्टेड फील्ड किया This forms one capacitor C1 and this is other C2. Upper plate की potential अगर V1 है lower की V2 है so we can say potential difference across two capacitors is same. Or you can simply remember whenever you divide the area between the two plates, these are capacitors connected in series or parallel. Parallel. Equivalent capacitance is C1 plus C2.
And C1 is epsilon naught because area half हो गया. In dielectric constants insert here. K1 plus K2. So you have there is 3 epsilon naught A by D. Epsilon naught A by D is 10. So 3 epsilon naught A by D will be 30. So 30 microfarad. Clear A? Next. An elliptical charge drops released to form a big drop. New potential, charge, capacity, energy stored. ये क्वेश्चन बहुत बार आया एंट्रेंस एग्जाम में मतलब कभी चार्ज पूछ लेते हैं कभी पोटेंशियल कभी कैपेसिटेंस कभी एनर्जी इसमें चारों एक ही में दे दिया मैंने n identical drops combines to form a big drop. Basically simple concept है कि when n drops combines to form a big drop, charge on big drop will be n times charge on small drop. एक drop पे अगर charge है when you combine n drops it will be n cube. And volume of n small drops is volume of one big drop. Volume of n small drops is volume of one big drop. So basically you can say radius of big drop is n raised to power 1 by 3 times radius of small drop plus charge on big drop is n times charge on small drop. So charge is n times. मतलब यहाँ तो ये ऑप्शन हो सकती है ये ऑप्शन हो सकता है दो ऑप्शन तो वैसे ही कट गया कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कैपेसिटर इज directly proportional. So if radius increases n raised to power 3 times, the capacitance will also increase n raised to power 3 times. So capacitance increases n raised to power 3 times. इस केस में it's 2 by 3. इस केस में it's 1 by 3. 500 तो ये बन गया. The capacitance of big drop is potential में निकाले potential is small drop की k q by r और big drop it's k into q by capital R. Q is n cubed. R is n raised to power 1 by 3. So it's n raised to power 2 by 3. ये भी satisfy हो गया. What about energy? Energy कैसे निकलेगी? कौन सा फॉर्मूला? अगर हम हाफ सीवी स्क्वायर लगाएं फाइनल इज कैपेसिटेंस becomes and potential is so ये भी satisfy हो जाएगा 5 by 3. So the option potential increases n raised to power 2 by 3, charge n times, capacitance n raised to power 1 by 3 times, energy is n raised to power 5 by 3 times. Clear? Parallel plate condenser with dielectric or dielectric constant K between plates has a capacity C and charge to potential difference P. The dielectric of dielectric constant. The dielectric scrap is slowly removed from the plates and then reinserted. Work done in the processes.
बेसिकली इनिशियल और फाइनल स्टेज सेम है। बिकॉज हमें दिया पहले डाइलेक्ट्रिक था उसे बाहर निकाला और फिर दोबारा से इंसर्ट कर दिया। बिकॉज हमने कैपेसिटर को पहले डाइलेक्ट्रिक को पहले रिमूव किया, हमें दिया नहीं है बैटरी कनेक्टेड बैटरी डिस्कनेक्टेड कुछ नहीं दिया। बट whatever इज द एनर्जी स्टोर्ड वो वापस उसी स्टेट में आ गया, क्योंकि पहले भी डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट था, बाहर निकाल के दोबारा से इंसर्ट कर दिया। तो फर्स्ट केस में जितना पॉजिटिव वर्क होगा सेकंड केस में उतना ही नेगेटिव वर्क हो जाएगा और वाइस वर्सा। So we say because there is no change in state, the change in energy will be zero. Energy stored in capacitor remains unchanged. Take a time required to produce a potential difference of 20 volt across a capacitor of 1000 microfarad when it is charged at a steady rate of 200 microcoulomb per second. We have to find the time required in seconds. कौन सा फॉर्मूला लगेगा? फॉर्मूला बताओ कौन सा लगेगा? टाइम रिक्वायर्ड इन सेकेंड to charge a capacitor. हमारे पास फॉर्मूला होता है that Q is equals to C. इसको डिफरेंशिएट कर। So we can say DTS. C हमें दिया है 1000 microfarad. D means the potential difference required is 20 and 200 microcoulomb per second. So it will be 100 seconds. Clear है? That two electric charges Q and minus 2Q are placed 3A apart. The locus of point in a plane of the charges where field potential is zero. हमें दो चार्जेस दिए, तो हमें बताना है locus of point where potential is zero. So if you assume some point over here, hence the potential at this point is zero. इसको मान लेते हैं region. Since 3 seconds
charge के coordinates 3 and 0. Point P के coordinates x5. We assume potential at point P to be 0. Potential due to positive charge at P. Positive charge का distance कितना है? The negative charge is P minus x square plus y square. Potential due to positive charge at P is minus potential due to negative charge. Simplify करो and देखो कौन सी equation बनती है. It should form a circle. इसको simplify करो and see that if it forms an equation of circle, अगर circle बनेगा तो उसका radius कितना होगा? इसको simplify करो and find the equation. Circle की बननी चाहिए and find the radius of the circle also. फिर इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ. Stand with it. Simplify for this equation. So the equation will be here. Physics to 850 क्या into maths है.
The equivalent capacitance between M and N is equivalent capacitance. Equivalent capacitance होगी क्या इन दोनों पॉइंट्स के बीच में? Capacitance का फॉर्मूला क्या होता है between any two points? Since charge इस केस में हो जाएगा Q upon Vm minus Vn because Vm और Vn दोनों की पोटेंशियल जीरो दी है. Equivalent capacitance is infinity because दोनों ends की सेम पोटेंशियल दी है. Three uncharged capacitors C1, C2 and C3 are connected as shown in figure. The point ABC are at potential V1, V2 and V3. You have to find potential of point O. फिर क्लास में क्या हुआ फिर उसको सॉल्व. You have to find potential of point O. इसको कैसे किया जाए फिर मैप में जैसे कि अगर चार्ज इस पे Q1 है इस पे Q2 conservation of charge implies that Q2 plus Q3 ये कंसेप्ट आता है सबको बिकॉज हम ले रहे हैं ये तीन प्लेट्स जो हैं एक्सटर्नली कनेक्टेड नहीं है. इस पे अगर मैंने प्लस Q1 दिया दिस विल बी माइनस Q1 प्लस Q2 इन तीनों में मिला के नेट चार्ज जीरो होना चाहिए. सो इसे Q1 is equals to Q2 plus Q3. Q1 is C1 into potential difference between these two points. Similarly, C2 Q2 is इसको सॉल्व करने you will always get this as the answer. C1 V1 plus C2 V2 plus C3 V3 upon C1 plus C1 plus C3. This is very important. इसकी याद formula. C1 V1 plus C2 V2 plus C3 V3 upon C1 plus C2 plus C3. Charge is fixed at each of the point x0, 3x0, 5x0 on x-axis. And charge minus Q is fixed at 2x0, 4x0, 6x0. Take the electric potential at point due to charge Q at a distance r from S Q by 4 pi epsilon naught. The potential at a region. ये किसके लिए given? ये statement. इसका क्या यूज है? Potential due to charge Q at a distance r is kq by r. इसका क्वेश्चन में क्या यूज है? आपको ये नहीं भी समझ में आती तो भी आपने ऐसे ही करना था. बट व्हाट डज दिस इंप्लाई? व्हाई दे हैव गिवन दिस इंफॉर्मेशन? जबकि उन्होंने दिया है कि potential at a distance r is kq by r. That means they are assuming potential at infinity to be zero. Because ये जो formula है v is equals to kq by r. This can only be used if potential at infinity is zero. बाकी it's a normal maths. हमें दिया कि एक चार्ज पॉजिटिव एक नेगेटिव है. हमने दिया कि चार्ज थ्रू इज फिक्स्ड है. इस फॉर्म में दिया.
यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है. You have to find the potential at a region. The potential at a region is taking the common value. First charge की potential positive, second की negative, third की positive, and so on. Region में कितनी हो जाएगी potential? हमारे पास ये फॉर्मूला आ गया. There is expansion of block. So V is equals to block. So D part. In Millikan's oil drop experiment, an oil drop carrying a charge Q is held stationary by a potential difference of 2400 volt between plates. To keep the drop of half the radius stationary, the potential difference that had to be made is 600 volt. What is the charge on the second drop? So ऐसे ही है कि मिलिकन ऑयल ड्रॉप्स में इसको स्टेशनरी रखने के लिए potential difference is 2400 volt. Radius half कर दिया, चार्ज बताना है. Potential difference is now 600. मिलिकन ऑयल ड्रॉप का कंसेप्ट क्या होता है? मिलिकन ऑयल ड्रॉप का कंसेप्ट set it for equilibrium. Weight is balanced by electric force. And this candle written is QV by D. The weight is balanced by electrical force. P is we can say Q is regardless. MGD by. हमें क्वेश्चन में गिवन है radius is reduced to half. If radius is reduced to half, the volume becomes, अगर radius half कर दिया तो volume becomes 1/8, mass becomes 1/8. Basically Q dash by Q. रेडियस हाफ कर दिया तो मास 1/8 हो गया. पहले पोटेंशियल 2400 थी, फिर 3/4 कर दी. Q dash comes Q by 2. क्लियर है कंसेप्ट की रेशियो ले ली Q की.
Work done in increasing potential difference across the plates of capacitor from 4 to 6 volt is W. Work done in increasing from 6 to 8 volt is. Potential difference बढ़ाएंगे तो वर्क डन क्यों करना पड़ता है? वर्क इज डन बिकॉज नॉर्मली हम लेते हैं वर्क इज डन टू इंक्रीज द एनर्जी. फर्स्ट केस में पोटेंशियल को बढ़ाया फ्रॉम 4 टू 6, फ्रॉम V1 to V2. सेकेंड केस में it's increased from V2 to V3. W1 given है, it's W2 बताना है. So अगर आप रेशो लोगे पहले तो 4 to 6 to 6 to 8. So 8 square minus 6 square. 64 minus 36. Oh. W2 is 7 by 5 W1. So yeah, answer. It's three charges. Q minus Q are located at vertices of equilateral triangle at the circumcenter of triangle. The conceptual बन गया. तो पोटेंशियल कितनी होगी सेंट्रॉइड पे? तीन चार्जेस की निकालनी है. ठीक है यार, स्केलर है बस, कोई डायरेक्शन है नॉट नहीं है. इक्विलेटरल ट्रायंगल में जब भी चार्जेस प्लेस्ड है और तीनों चार्जेस का सम जीरो है तो पोटेंशियल एट सेंट्रॉइड विल ऑलवेज बी सेम. जैसे अगर Q1 Q2 Q3 तीन चार्जेस है इक्विलेटरल ट्रायंगल की तीन साइड्स पे, तो सेंट्रॉइड पे पोटेंशियल आएगी Q1 plus Q2 plus Q3 by R. So it will always be zero अगर sum of charges zero है. इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर हम बात करें, you place a test charge over here. टेस्ट चार्ज रखेंगे तो पॉजिटिव इसको रिपेल करेगा, ये रिपेल करेगा इधर, तो नेगेटिव अट्रैक्ट करेगा. इन तीनों का सम जीरो हो सकता है बिकॉज इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा वो भी इसी डायरेक्शन में होगा. सो फील्ड इज नॉट बैलेंस्ड. Field is not zero, but potential is zero. The electric intensity at a point 2 meter from charge Q is E.
The amount of work done in bringing charge 2 coulomb from infinity to this point is. हमें दिया electric field at a distance of 2 meter is E. Work done to move a charge from infinity to this point. कैसे करेंगे? हमें दिया है चार्ज पॉइंट पी पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है दैट इज ई. State Q by 4 is E. Potential of point P is equal to potential is work done to move 1 coulomb charge from infinity to that point. 1 coulomb को लेके आए तो work done is E by 2. 2 coulomb को लेके आएंगे तो it will be sorry, this is 2E. So work done to move 1 coulomb is 2E, तो 2 coulomb को लेके आएंगे तो it is 4E. So it will be 4E. Clear? The dielectric slab of thickness 6 centimeters is produced between plates of parallel plate condenser. It is found that distance has to be increased by 4 centimeters to restore the capacity to original value. Dielectric constant of the slab. दो formulas लगेंगे तो फिर air है air capacitor C is epsilon not A by D. मीडियम इंसर्ट कर दिया ये फॉर्मूला हमें दिया है कि अगर हमने मीडियम इंसर्ट किया तो इस डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स को 4 सेंटीमीटर बढ़ाना पड़ेगा. मतलब जो पहले डी था तो डी डैश विल बी सेंटीमीटर. अब ये दोनों कैपेसिटेंस सेम कब होगी? डी इज इक्वल्स टू तुमने ये बताना है डी हमें बताना है डायरेक्टली कांस्टेंट. So you can write this as D is equals to D तो कैंसिल हो जाएगा. D is given as 6. So 1 by k is 1 by 3, k is 3. Clear as it the board का payment हो गया.
3 marks now, for example. 4 microfarad capacitor is charged by 200-volt battery. It is disconnected from the supply. So battery is disconnected and connected to another uncharged 2 microfarad capacitor. During the process, loss of energies. इसका फॉर्मूला ट्राई किया था लॉस ऑफ एनर्जी and capacity combination. Half C1 C2 upon V1 C1 plus C2 into V1 minus V2 का whole square. तो हमें capacitance दिए हैं 482 microfarad में मैंने दे 0.4 plus 2 and 200 minus. Task managed to micro change characteristics. Microeconomic. So it's 32 by 12 to 10 raised to the minus 2. It's 0.67 into 10 raised to the minus 2. Three condensers of capacity 3 millifarad, 6 millifarad, and 12 millifarad are connected in series. If the charge on 12 millifarad is 24 millicoulomb, potential difference across the battery. Theme capacitor. इस पे चार्ज दिया है 20. Imino Q is equals to CV. इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सीरीज कॉम्बिनेशन में चार्ज सेम है इस पे भी चार्ज 24 by 6 24 by 3 so total potential difference is 14 volt मतलब इसमें हमें क्यों पता था वहां से भी निकाल लिया फिर इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस just charge सब पे सेम है so Q by C1 plus Q by C2 plus Q by C3 प्लस इस पे जो चार्ज दिया था वहां से इसका पोटेंशियल डिफरेंस है बाकी सब पे भी सेम चार्ज है क्लियर है so the total potential differences 14 volt. The potential difference between plates of capacitor is increased by 20%. The energy stored in condenser will increase by.
Potential difference increases by 20%. So it's 1.44 CV percentage increase in energy. It will be 44%. Clearly, so next time वैसे क्या आगे और दोपहर को भी क्लास लगाएंगे मैथमेटिक की